Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid. You are on the channel of Medicare. Now in this chapter we are going to discuss about the autocoids. So this is the new chapter of pharmacology and we are going to discuss the histamine in this chapter. So now let's start the lecture. So what are autocoids? What are them? So very simple. The auto and coid, it consists of two words. The word auto means self, and it came from a Greek word which is called autokos. So nothing to mention it, just discuss its meaning, which means self. Okay, and quoids mean medicinal agent, means self medicinal agents. अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ पहले से our body has some medicinal agent already present in it. ठीक है, कुछ तो मेडिसिन एजेंट वो होते हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं ड्रग की सूरत में, किसी मेडिसिन की सूरत में। बट हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने पहले से ही कुछ मेडिसिन एजेंट बनाए हुए हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोकॉइड्स। तो ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब एंडो मीन अंदर और जीनियस मीन हमारी बॉडी के जो अंदर होते हैं, और ये पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ग्रुप है पूरा ऐसे सब्सटेंसेस का जो रेगुलेट करता है बहुत सारे आपके बायोलॉजिकल, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं। कोई एक फंक्शन रेगुलेट नहीं कर रहे, ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहे हैं, या आपके हार्ट पे एक्ट कर रहे हैं, या आपके ब्रोंकियोस पे एक्ट कर रहे हैं, या आपके जीआईटी पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब तकरीबन ये हर तकरीबन टिश्यू पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट प्रोड्यूस बाय वन टिश्यू, ये हमारे बॉडी के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनसे ही प्रोड्यूस होंगे, एंड एक्सर्ट देयर एफर्ट्स ऑन द सराउंडिंग टिश्यूज़, तो अपने इफेक्ट जो है वो सराउंडिंग टिश्यू में देंगे। ठीक है, सो ये हार्मोन्स नहीं है, इनको आपने हार्मोन से मिक्स नहीं करना है। जैसा हार्मोन स्पेसिफिक एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, वो चीज़ ये हार्मोन नहीं है, ये टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये बॉडी के अंदर ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन नहीं होंगे। सो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, 3 ऑटोकॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 3 ऑटोकॉइड्स हैं और हमने इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, बट आज हम सिर्फ हिस्टामिन को देखेंगे। सो फंक्शन क्या है, ये ऑटोकॉइड्स क्यों है हमारी बॉडी में, कर क्या रहे हैं हमारी बॉडी में। सो ये हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। आपको पता है inflammation is the one of the most important defense mechanism in your body. So whenever your body feels that something harmful enter in your body, it produces the inflammation to tell to you that you don't take care of yourself and something enters into your body. So it is going to telling you that something harmful is entered. So now what are the function of autocoid? So let's discuss that. So it's regulate the immune responses, like whenever something wrongly happens or some harmful material enters into your body, so it's regulate our immune system, it manages our immune system such that it will allow specific cells to kill them, it will produce the specific cells and manage all the things, tell your body that something harmful happens, your all the coordination will happen. And it also regulate the gastric situations and muscle contraction. So let's discuss the first autocoid, which is a histamine. Histamine is a chemical messenger produced by the mast cell. और भी different cells से ये produce करता है, but mast cell इन्हें ज़्यादातर produce करते हैं. Location of histamine, where it is located, it is located in various tissues. For example, in the lungs tissue, specifically in the bronchioles. It also present in the skin. In the skin, we can say they are present in the blood vessels of the skin, you can say capillaries of the skin. So they are dilating the blood vessels so that more and more material could diffuse in or out. They are present in the mast cell, they are present in the basophils, which are causing allergy. They are also present in the brain. In the brain, they are acting as a neurotransmitter. So they coordinate the function between different body parts. So let's discuss how the histamine is synthesized. That's very simple. Our body has an amino acid. Okay, so what it is?
our body has a natural amino acid which is called as histidine. Now, this histidine will convert itself into the histamine via a process which is called as decarboxylation. D mean removal and carboxylation mean carbo carbon dioxide. So ये किस तरह से होगा, एक एंजाइम से जिसको हम कहते हैं हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से, उससे हमारा हिस्टामीन बनेगा। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स क्या हैं इसके रिलीज़ करने की, यानी क्या ऐसा स्टिमुलाई, क्या ऐसा चीज़ होगी कि हिस्टामीन रिलीज़ होगा। जो कुछ तरह के स्टिमुलेट्स आते हैं वो हिस्टामीन को रिलाइज करवाते हैं। कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे माइक्रोब्स की एंट्री होगी मैस्ट सेल्स के ऊपर, आईजीई एंटीबॉडी अटैच होगा और मैस्ट सेल डीग्रेनुलेट होता है। सो माइक्रोब्स या एलर्जी की वजह से भी ये रिलीज़ होते हैं। मैकेनिज़्म क्या है, हिस्टामीन ने आगे करना क्या है, हिस्टामीन रिलीज़ हो गया, सिंथेसाइज हुआ पहले, फिर रिलीज़ हुआ, अब उसने करना क्या है, हिस्टामीन जाके बाइंड कर जाएगा योर histaminic receptor which are present in your body and do various functions according to its types. So what are the histaminic receptors? So they are the receptor which are present in many parts of your body and on which the histamine is going to bind and perform the specific function. So how many types of histamine receptor are? So there are four types of histamine receptor: histamine 1, 2, 3, and 4. So we are going to discuss that how they are distributed there and what is the role of them. So first, they are the histaminic H1 receptor. It present in the smooth muscles of your JIT, smooth muscles of your bronchiole. On the both, they are causing vasoconstriction here, so they are constricting your muscles, and they are also present on the immune cell like mast cells or basophils, and they are present in the vesitubular endothelium, like they are causing the vasodilation, dilating your blood vessels. They are present in the CNS neurons like CTZ, vomiting center, vertebral apparatus. They are causing the emesis here. In the cardiovascular system, it is decreasing the blood pressure by decreasing the resistance, and it also present on the exocrine secretions like increase the nasal or bronchial mucus secretions. So now let's discuss the other receptors. So now we have to going to discuss about the S2 receptors. So they are distributed in your parietal cells, like they are increasing the HCl production here. They are present on the cardiac muscles, increasing the contraction and the heart rate. So heart rate is increased by a process which called a positive chondrotropic. Positive chondrotropic mean heart rate is increased, and positive inotropic mean contraction increase. स्मूथ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होंगे उनको वैसे डायलेट करवाएगा, और CNS के न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करवाएगा. H3 receptor is present in the central nervous system. It regulates the release of the neurotransmitter. Various neurotransmitter like acetylcholine, histamine, dopamine, serotonin. I have also said to you that histamine is a neurotransmitter. So ये खुद को भी रिलीज करवा रहा है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. सो H4 रिसेप्टर्स क्या है कि इम्यून सेल्स जैसे मैस्ट सेल्स, सिनोफिल्स एंड टी सेल्स के ऊपर होते हैं, इंक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन. So this was all about the receptors of histamine. Now we are going to discuss the antihistaminic. What are them? सो एंटी हिस्टामिनिक मीन हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाले, हिस्टामिन को ख़त्म करने वाले. सो ये हमारे पास कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट हैं ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर. सो दे आर mainly two receptors are present in our body, H1 and H2. H3 and H4, they are not important as much. So we have two only blockers, H1 blockers and H2 blockers here. So H1 blockers, it consists of two generation, first generation and then the second generation. So first generation mean they are discovered first, but they have a lot of side effects. So due to their side effects, they are not used in the modern age. But in the second generation they have less side effect and they are more efficient to use. So now in that area these are used. So why the first generation is not used? Because it has sedative action, while the second generation has the less sedative or no sedative effects.
So it's include hydroxyzine, promethazine, diphenhydramine, meclizine, seclizine, and dimenhydrinate. So it is the derivative of it. So in this a drug we add carboxyl group, we get that, which is the second generation. So in the second generation we have, so sorry bacho for this incomplete. So we are discussing the second generations. We know that they have less sedative or no sedative effects. Their drug are cetirizine, levocetirizine, doracetirizine, and phenazine. So they have less sedative or no sedative effects. Let's discuss about the uses. It's used in the allergy to stop the Ig antibody in the drugs like lacidine and ketotifen. Okay, they also used to control motion sickness like dimenhydride, cyclizine, and meclizine. Some antimuscarinic drugs are also used. They block the cholinergic receptor like muscarinic receptor and decrease the motion sickness like scopolamine. Also treat the insomnia with the drugs which is diphenhydramine and doxylamine, but they have sedative effects. Kinetics of these drugs are they have a very good absorption, release by urine, and half life is 4 to 6 hours, which is normal. But adverse effect is are like sedative effect, secretions could come कर देता है जिसकी वजह से dryness, blurred vision, urine retention, and headache is the one of the most important adverse effect. टॉक्सिसिटी अगर होगी तो कन्वलेशन और एक्साइटमेंट हो सकती है। H2 रिसेप्टर जो ब्लॉकर्स हैं ये अल्सर के ट्रीट के लिए और ग्रेड के ट्रीट के लिए होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो इसके लिए ड्रग्स सिमिटिडीन, रेनोटिडीन, फेनोटिडीन और नाइजोटिडीन ड्रग्स हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।